You have seen many flowers that are of different colors. Have you ever wondered why do they have such colors? Because of incomplete dominance. Gregor Mendel conducted experiments on pea plants. He studied on 7 characters with contrasting traits and all of them showed a similar pattern of inheritance. Based on this, he generalized the law of inheritance. So we know that Gregor Mendel was the one who conducted experiment and he gave the law of inheritance based on his experiment. But later, after the Gregor Mendel, researchers repeated Mendel's experiment on other plants. Shockingly, they noted that the F1 generation showed variation from the usual pattern of inheritance. The monohybrid cross resulted in F1 progeny which didn't show any resemblance to either of the parents but an intermediate progeny. सो आफ्टर ग्रेगोर मेंडल के बाद जब बाकी के रिसर्चर्स ने कुछ और रिसर्चर्स ने मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट को बाकी प्लांट्स पर परफॉर्म किया, तब उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि काफ़ी प्लांट्स ऐसे थे जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं कर रहे थे. एंड व्हाट वाज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? कि F1 जनरेशन में पेरेंटल जनरेशन का कोई भी एक कैरेक्टर आता था, बट बाकी सारी प्लांट्स में अब ऐसा ही नहीं कि सारे प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो पेरेंटल जनरेशन का कोई भी कैरेक्टर शो नहीं कर रहे थे. एंड वन ऑफ द अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज Shubilanthus kunthiana. You can also say it snapdragon. Now what exactly is incomplete dominance? Incomplete dominance occurs in the heterozygote, in which the dominant allele does not dominate the recessive allele entirely. Rather, an intermediate trait appears in the offspring. The offspring do not show the parental phenotype. The offspring shows both parental phenotypes. तो incomplete dominance में जो offspring होता है उसमें पेरेंटल जनरेशन का कोई भी कैरेक्टर नहीं आता है. जिस कंट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर चलते हैं उस कंट्रास्टिंग ट्रेट का कोई भी कैरेक्टर नहीं आता और ऑफस्प्रिंग जो है वो एक इंटरमीडिएट ट्रेट बनाता है. नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द एग्जांपल्स. Monohybrid cross was done between the red and white colored flowers of snapdragon plant. Consider pure breed of the red flower has capital R pair of alleles and that for the white flower is small r. तो स्नैपड्रैगन के ही प्लांट को कुछ रिसर्चर्स ने पहले लिया होगा और कैपिटल आर पेयर जो रेड कलर का था एंड स्मॉल आर पेयर जो वाइट कलर का था, ये उन्हें केवल एक डिनोशन दिया गया था. उनमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद, वाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस? बिकॉज द कंट्रास्टिंग ट्रेट इज़ ओनली सिंगल. यहाँ पे केवल एक कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया जा रहा है. फर्स्टली ट्रू ब्रीडिंग रेड capital R and white small r colored flowers of snapdragon were crossed. The F1 generation produced a pink colored flower with capital R small r pair of alleles. So here in this figure you can see that the parental generation consists red flower and a white flower, and after the cross it produced the pink flower which is neither in red color nor in white color, and the intermediate flower is in a heterozygotic condition. After the F1 flower was self-hybridized, then it produced all the traits in F2 generation and the ratio of 1:2:1. So here you can see that the traits of the parental generation was not passed in the F1 generation, but instead of F1 generation it was passed to the F2 generation in the ratio of 1:2:1. The phenotypic and the genotypic ratio are the same. The another example of incomplete dominance in humans is that the child of parents each with curly hair and straight hair will always have wavy hair. Suppose one of the parents, suppose the father is having the straight hair and the mother is having the curly hair, then their offspring will have the wavy hair. Now here also you can see that the hair trait was not passed from the parental generation to the offspring generation. So